Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of presentation is optics of low vision aids, and I'll present about where are these used in practical life. The specific learning outcomes. By the end of the presentation, the audience will be able to define low vision, differentiate between low vision and legal blindness, describe the role of low vision aids, describe the types of low vision aids, understand the concept of Galilean telescope, and the limitations of low vision aids, and what are their disadvantages. So magnifying devices of several kinds are used to assist the poorly sighted people who have no chance of improvement in their vision. So in order to assist them in their daily life activities, low vision aids are used so that they are held maximally and they can perform their daily life activities. Most so-called low vision aids are designed to be used as reading aids, that is for near vision. And however, other devices exist to assist distance vision, for example, to enable the patient to read bus numbers and watch television so that they can at least perform their maximum daily activities without any help. Now the principle is that all the low vision aids, they work by providing the patient with a magnified view of the object so that they can see the objects very clearly. Most are the optical systems which act by increasing the angle subtended by the object at the eye, thus producing an enlarged retinal image. Projection systems are also coming into use as low vision aids, and a large image of the object is presented to the patient on a screen which he or she can view from a convenient distance. An example is closed circuit television CCTV, which is a means of achieving this and is in limited use. So there are a number of devices which I'll discuss later as to how they can help the patient in daily life activity. CCTV cameras is one of them. The other are the telescopes. Then there are some alarm clocks as well. There are some large print books. So these are different sort of devices we can help the patient in their daily life activities. So anybody can define low vision. What actually is low vision? Yes. Less than 10 to so basically, but what sort of, how can we define low vision that which cannot be the definition here is vision loss that cannot be corrected by medical or surgical treatment and cannot be corrected by the standard eyeglasses. So the cause may be either an ocular or neurologic disease. So any idea of any diseases that are commonly encountered in our OPDs that are not corrected by medical surgical treatment? Dystrophies, yes. Macular dystrophies, retinitis pigmentosa commonly encountered, yes. Stargardt disease, macular diseases. So all these require low vision aids, and we generally refer these patients to the uh, low vision aid clinics. Now coming to another important topic is legal blindness, a level of vision loss at which patients are entitled to certain concessions or services in various jurisdictions. Now coming to the devices that are used commonly in daily life activities. A high power simple convex lens mounted on a spectacle frame works in the same way. The magnifying power is achieved by allowing the eye to view the object at closer range than would be possible unaided or with a standard presbyopic reading correction. However, the power of a lens used, that is 5 diopters, is less than that of the standard Lu. Now we have already studied that the magnifying lens has a power of plus 32 diopters. So that in this case the convex may be regarded as an enhanced presbyopic correction. If you can see here, I will explain with the help of a diagram. This is the convex lens spectacle that is used as a low vision aid. 65-year-old emmetrope with age-related macular degeneration. So if you can see here, this is the distance at which the angle is subtended at the eye at 40 centimeter. This is the angle that is subtended at the retina, and if you can see here, if this distance is reduced to half of that, the angle subtended at the retina is greater, so that it produces an enhanced object at in magnified view of the object, so that the patient is able to see clearly. So the principle involved here is that if the distance is reduced to half of this uh, the object is placed as half of this distance, so it will present an enlarged image. So the principle is angle subtended at eye by object at 40 centimeter compared with angle subtended at the eye by object 20 centimeters. So if you can see here, if the angle subtended at 20 centimeter is more greater as compared to the angle subtended at 40 centimeter. So you can see here the image that is produced is enlarged as compared to the object when it was placed at 40 centimeters.
Now again, that concept is applied to the magnifying lens. We have already studied that how a convex lens is used as a magnifying lens. If the object is placed between the principal focus and the lens, so if you get the principal focus and the center of the lens, so the image produced is virtual, erect and magnified. And what happens is here that two rays, as you can see, they are drawn here, and the image that is produced is virtual, erect and magnified. So this is the principle of the magnifying lens. Convex lenses are also used as handheld magnifiers or mounted on legs as stand magnifiers. As the object moves nearer to the first principal focus, the virtual image becomes larger and situated further from the air. So as I explained earlier, the more the object is placed between the principal focus and the lens, so the image produces further from the air and virtual image. Thus, a handheld magnifier can be positioned by the user so that the image is formed at a comfortable viewing distance from the eye. This is the commonly used stand magnifier that is used by the patients who use low vision aids. So it doesn't have the option, so the patient doesn't have to hold it clearly at different distances. It has a stand which can easily allow the patient to view it at a comfortable distance. Now the electronic devices allow magnification, contrast enhancement and text to speech conversion, and using video magnifiers such as screens, the CCTVs, computers and now tablets are commonly encountered, which are used patients with low vision. Video magnifiers are available in various formats including handheld desk versions or devices worn on the head. I'll explain now the types of low vision aids that are commonly encountered. These are the non-optical devices, now the tints and filters, convex lens aids, telescopes, as well as electronic devices. Now the non-optical devices, some are the optical devices and some are the non-optical devices. So these are adaptive aids such as large print books, talking clocks, and fluid level indicators, so that they can help the patient. This is a sort of a talking clock in which they can, speak and help the patient in seeing the time and everything. These are large print books which have large fonts, so that the patient is able to see them very clearly. Now, certain tints and filters are also used, which allow the patient to see uh, clearly with the help of low vision aids. Now, gray lenses reduce light intensity, and yellow lenses improve the contrast. An anti-reflective coating on spectacles can be used to reduce the glare. Convex lens aids. Handheld magnifiers, as studied earlier, they are also the same sort of the principle of the magnifying lens. So, a focused image is always provided at a set distance, as I just discussed previously. Then is the paperweight. Another variant is the paperweight plano convex lens. So if you can see here, if that paperweight is placed on the text, so the patient is able to read it very clearly. Telescopes. Now there are important concept about the telescopes, and normally we have encountered them to use to see the objects such as the moon, very far objects, but they are also encountered commonly. So they are able to see the things very closely. They can be focused from distance to near, but have the disadvantage of small and shallow visual field. I'll discuss later about the concept of Galilean telescope. Now the electronic devices, portable video magnifiers such as reading machines, image scanners, and closed circuit television. So this is another picture as to how they can electronic devices are used. This is another example of the electronic devices enabling the patient to see very clearly. Now the Galilean telescope. Anybody has an idea as to how the working principle of the Galilean telescope is? How the lens are used? What are the two types of lenses? On yes, yes. So they are basically it is a convex objective and a concave eyepiece lens is used, which is separated by the distance of their focal lengths. It is composed of a convex objective and a concave eyepiece at the distance of their focal length. So it produces an erect magnified image, and the image is not greatly distorted by curvature of field or astigmatism. So this is the principle you can see here. Now this is the rays of light coming from the object. So they strike this principal plane, and this is the convex objective that I just mentioned. This is the convex objective. So the rays of light, they are move in the direction that they again strike this concave eyepiece. So they are diverged in from here in the form of this is a convex lens. So they are converged and then they are diverged away from
this principal plane of the lens. So this is the angle of incidence at which the rays of light strike this principal plane. This is the angle of incidence, and this is the angle of emergence. And these are, as I told you earlier, that the convex objective and the concave eyepiece lens, they are separated by the distance of the two focal lengths. This is the focal length of this eyepiece, and this is the focal length of the objective lens. So in order to calculate the magnification, we can either have the ratio of the angle of emergence over the angle of incidence, and either we can see compare the ratio of the focal length of this objective lens and the focal length of this eyepiece. As I told you earlier, angular magnification will be either we can compare the ratio of angle of emergence over angle of incidence, and either we can mathematically we can Fe over Fo, where Fe is the power of the eyepiece lens in diopters and Fo is the power of the objective lens in diopters. So we can use both of the two values to calculate the angular magnification. Now, limitations of low vision aids. Anybody has an idea that because they are producing magnified view of the object, so what will be the limitations? Field of view is commonly encountered is that the field of view is reduced. High magnification results in a reduced field of view, which makes rapid scanning of a line or page of print impossible. So this factor also limits the usefulness of distance low vision aids. So common encounter is reduced. Another is because if a handheld magnifier is used, so patient constantly has the inconvenience to hold it at a very close distance to view the objects very clearly. And the other is that the depth of focus is reduced. If you can see that since it provides us a magnified view of the object, so the depth of focus is reduced. The object to be viewed has to be held at a close distance to the eye, and the magnification means that the depth of focus is reduced. Thus, the object lens distance is very critical. So, MCQs. So, number one is the following may be used as low vision aids, which is the incorrect option. All these, one of them has to be incorrect. false हाँ sir, one of them is false. नहीं हर एक के लिए कॉलेज में भी यूज है हाँ ट्रू है, ट्रेस चैनल सीसीटीवी भी ट्रू है. हाँ डी फॉल हाँ डी फॉल्स, अदरवाइज ऑल यूज टेलीस्कोप भी. कन्वेक्स लेंस नहीं यूज होता, बाकी सारे यूज हो रहे हैं. The disadvantage of using optical magnifying glasses for low vision aids include, now the disadvantages: reduced depth of focus, तो reduced visual, convex. जी सर लेकिन मैंने वो उसमें जहाँ से सोर्स लिया था उसने कहा था कि ये इनकरेक्ट है कॉमनली. हाँ सर वर्टिकल बार, अच्छा जी सर, ठीक सर. The disadvantage of using optical magnifying glasses for low vision aids, इनमें से कौन सी होती है? A and B are true, right, very right. Yes sir, D false है, object is true. सर कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होगा. नहीं होगा, रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा. सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू और डेप्थ ऑफ फोकस जो है ना वो रिड्यूस होंगे, अदरवाइज उनका कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा. The following are true about the convex lens for low vision aids. So this is, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी अगर कॉन्वेक्स लेंस से हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास उसको एज अ लो विजन एड यूज कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मतलब देयर इज वन फॉल्स, द अदर इज, वन ऑफ देम इज फॉल्स, द अदर आर ट्रू. दिस द हिंट इज, हाँ फोकल पॉइंट से तो आगे होगी बिल्कुल. वर्चुअल इरेक्ट होता है कोई. छोटा होगा ना, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा.
हाँ, A is false, otherwise all are true, क्योंकि A virtual erect magnified image होता है। डी के बारे में बताइए। किसके बारे में सर? डी को एक्सप्लेन करेंगे। The field of vision obtained is decreased as the user moved away from the field of vision obtained is decreased. सर अगर वो जी सर क्या किस प्रिंसिपल पे है? सर अगर वो प्रिंसिपल फोकस से करीब आएगा और लेंस के दरमियान है तो ऑब्वियसली वो फील्ड ऑफ व्यू रिड्यूस्ड है। तो इफ द यूजर मूव्ड अवे फ्रॉम सर अगर हम जितना उससे दूर जाएंगे लेंस से तो उतना फिर वो रिड्यूस होएगा फील्ड ऑफ व्यू, मैग्नीफाइड इमेज आएगा। विजुअल एंगल। विजुअल विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना करीब आते हैं बढ़ता जाता है, बिल्कुल सर। बड़ा होता है। जी सर। आई लेंस। field of view obtained is decreased as the इसकी बात करें डी की। हाँ क्या कह रहे हैं आप पूरा? If the user is moved away from the lens. in the field of view obtained आप किसी भी चीज को देखें या आप इमेज और उसके दरमियान अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट के तो एंगल सबटेंडेड कम होएगा, कम होता है। कम हो जाएगा। जितना करीब आएंगे तो विजुअल एंगल जो है वो बढ़ेगा। ठीक सर। किसी भी चीज को करीब लाने से उसके में इंक्रीज होने का बिल्कुल सर, ऐसे ही है। इंक्रीज विजुअल एंगल। बिल्कुल सर। Now the following are true about the Galilean telescopes. So, हाँ वो it is made of one convex objective and a concave eyepiece, तो वो तो false है। Difference is the summation. So the, तो Light intensity reduced. Contrast to A और B false and the rest of them are true. C, D and E are true. Usually lighter होता है than astronomical telescope. Usually shorter than the astronomical telescope and the image produced is usually dimmer than that seen by the naked eye. तो A और B सिर्फ false होंगे, बाकी सारे true हैं। And last of them, the image produced by Galilean telescope is this is तो very simple. इसमें से दो ही incorrect हैं, straight forward है। Inverted तो नहीं है बिल्कुल। हाँ बेसिकली वो है ना वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड और इन्फिनिटी होता है, बिकॉज वो लाइंस तो मीट नहीं कर रही होती तो पीछे आप ड्रॉ करते हैं इन्फिनिटी पे जाता है। हाँ ए और सी फॉल्स हैं, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। ठीक है, सो ये एक एडिशनल था। द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द गैलीलियन टेलीस्कोप। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए था तो मैंने ए ट्रू है। ठीक है। मच लेस पावर देन द आईपीस। हाँ उसकी पावर कम है एज कम्पेयर टू आईपीस। ठीक है। हाँ वो भी वो ये सी फॉल्स है। हाँ इसके लिए नहीं होता सी और डी। तो हाँ ई तो ट्रू है ना, एंगल सबटेंडेड इंक्रीज होएगा। इसमें होगा सी और डी फॉल्स होगा। ठीक है, सी और डी फॉल्स होगा, ए बी और ई करेक्ट है। ये वैसे फैक्चुअल था। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेरी वेल डन डॉक्टर फहद। ऐसे लो आपके बहुत अच्छे थे और बाकी जो स्लाइड्स थी वो भी कोई ओवर क्राउडेड नहीं थी और इंटरेक्टिव भी आप रहे, तो गुड, दीज आर द प्लस पॉइंट्स। जो मैं चाहूँगा ना अगली दफ़ा इम्प्रूव करें वो ये एमसीक्यू है। जब एमसीक्यू बनाते हैं ना तो आपने टेस्ट में देना है या आप बुक पब्लिश कर रहे हैं उसमें, तो वहाँ पे आप साथ खड़े नहीं होंगे बताने के लिए कि मैं ये समझता हूँ, वो लिखा होना चाहिए जो द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, एक लफ्ज़ आपने ऐड करना है और उन 5 में से एक
फर्ज करो आप समझते हैं गलत है, अगर आप समझते हैं कि दो गलत हैं तो लिखें द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट द टू। तो मतलब आप हर जगह पे साथ नहीं होंगे अपने एमसीक्यू के खड़े होकर बताएंगे कि जी करना क्या है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और अगर कोई आपको चीज़ समझ ना आ रही हो तो प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले सर से कंसल्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ जाएं, किसी से मशवरा कर लें। मतलब ये प्रेजेंटेशन जो आपकी होनी चाहिए ना वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉ मटेरियल। तो इसको ज़रा कोशिश करें आइंदा से प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले जो आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं या डाउट्स हैं या कोई आप समझते हैं ये मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा, उसको किसी सीनियर से डिस्कस करें। और इस स्टेज पे आके आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रिफाइंड होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज वर ऑफ वेरी लो क्वालिटी। अब तो एमसीक्यू के बगैर गुजारा नहीं है, आपने भी बनाने हैं सुपरवाइजर और हर इम्तहान में भी आए, तो इसको तो अंडरस्टैंड करें कि एमसीक्यू कैसे बनाना है। और ये जो होते हैं ना फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट विच इज़ नॉट ट्रू, ये कोई अच्छे नहीं समझे जाते। ठीक है, तो ये बनाएं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं कि वो बंदे को समझ नहीं आ रही यार मैंने करना क्या है। आपने एमसीक्यू ऐसा बनाना है जिसकी जो क्लियर कट समझ आ रही हो। हमने नॉलेज चेक करनी है, हमने उसकी आईक्यू नहीं चेक करनी है। ये कोई साइकोलॉजी का टेस्ट नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं, ये ऑप्थेमोलॉजी का एग्जामिनेशन है। इसमें हमने जो कैंडिडेट है उसकी नॉलेज चेक करनी होती है। ठीक है, सो वेरी सिंपल एमसीक्यू है जो जिसमें कोई डाउट ना कंफ्यूजन ना हो, समझ आ जाए। आता है कि नहीं आता वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ओके, सो लो वी एन एड स्पेशली जो है वेस्टर्न कंट्रीज उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि उनकी जो हेरिडिटरी रेटिनल डिस्ट्रोफीज होती हैं वो ज़्यादा है। कैटरेक्ट उन्होंने मैनेज कर लिया है, कॉर्नियल ओपेसिटी वो होने नहीं देते। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कॉर्नियल कॉजेज ही बहुत ज़्यादा है इन्फेक्टिव। वो अल्सर हो गया, केराटाइटिस हो गया, वीएन डिक्रीज हो गई और बहुत सारे कैटरेक्ट वो ऑपरेट नहीं हो पा रहे होते। तो हमारे यहाँ तो कॉर्नियल और लेंटिकुलर कॉजेज ब्लाइंडनेस के ज़्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि कॉर्नियल और लेंस ये मैनेज कर लेते हैं, जो चीज़ मैंने नहीं हो पा रही अभी तक वो है उनकी हेरिडिटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफीज। उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं है और वीएन भी कम हो जाती है। अब ये पेशेंट आ जाता है इरिटेटिव मैकुलर डीजनरेशन का, ड्राई है, ड्रूसन है। अब सो ये जो कॉजेज हैं जिनमें वीएन लॉस प्रिवेंटेबल नहीं है उसमें फिर आपको लो वीएन एड पे ही जाना। तो अब बहुत सारे इसमें आप एक्सपेरिमेंट जो वो होते रहते हैं। आपने वर्ड सुना आर्गस का, तो रेटिनल इम्प्लांट्स का। कर्नल इलाही बख्श जो थे ना वो कायदे आज़म के वो पर्सनल फिजिशियन थे। तो उनका ग्रैंडसन है, उसका नाम है पता नहीं अकबर को इस तरह करके, वो अमेरिका में ये रेटिनल इम्प्लांट्स पे उसने डिस्कवरी की थी। ओबामा ने उसको को गिफ्ट शिफ्ट भी दिया और अवार्ड भी दिया और इस तरह। सो जो अभी ये कर रहे हैं ना आईटी वाले रिसर्च, वो इस बात पे कर रहे हैं कि अगर हम छोटी सी चिप रेटिना पे डाल दें तो जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो ब्रेन को कैसे पास करे। तो कुछ इस तरह के डिवाइसेस हैं कि जो आप ग्लासेस के साथ लगा लें कैमरे की तरह के, तो जब वो साइन बोर्ड देखता है तो वो उसको वर्बल में चेंज कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक लिखा हुआ है तो वो जब अपना रुख उधर करेगा तो कैमरा पढ़ लेगा तो वो बोल देगा बैंक या टॉयलेट या इस तरह करके। सो जो विजुअली हैंडीकैप बंदे हैं उनको असिस्टेंस हो जाती है वो। सो ये इमर्जिंग फील्ड है कि किस तरह आप जो ट्रीटेबल विजुअल कंडीशन, जो अनट्रीटेबल कंडीशन है जिसमें आप नहीं कुछ कर सकते मेडिकली है, उनमें वीएन कैसे सप्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है सर। रिसेंटली इसके बारे में एक वायरल हुई थी वीडियो जिसमें वो इजराइल का नाम था कि इजराइल ने
बनाया है, इसमें वही चिप लगी हुई है और देख रहे हैं और वर्बली वीडियो वायरल तो इसमें ज़रा गूगल सर्च भी कर लिया करें। जब किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब में तो चीज़ें 10-15 साल पुरानी होती हैं, होती ठीक है, सारी ऑथेंटिक हैं, लेकिन जब आप गूगल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा मेरा लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रही। तो हाँ। जनरेशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट का आपको पता होना चाहिए। जब आप पास होने पे आ जाते हैं तो उसके बाद एग्जामिनर वांट्स टू गिव यू एडिशनल मार्क्स, तो उसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि इस टॉपिक पे जो भी डिस्कस हो रहा है कि रिसेंटली क्या चीजें एडवांसमेंट्स हुए। तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ें तो उसको करंटली क्या काम है। नॉर्मली हम पेशेंट को भी रेफर ही करते हैं ना ऐसे उसके अगर हमारे पास फैसिलिटी तो फिर आप किसी और क्लिनिक में देना तो वहीं से फिर फॉलो अप करवाएं। असल में आप गाइड तो कर सकते हैं ना, पेशेंट को की मालूमात में इजाफा तो कर सकते हैं कि भाई साहब ये आपके लिए बेहतर है। अब अवेलेबल कहाँ होता है वो अलहदा चीज़ है। वो अगर हमारे पास नहीं भी अवेलेबल तो हमने पेशेंट को गाइड तो करना होता है ना कि आपका कोई हल है, कोई आप चीज को। दूसरा ये कि अभी हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन यूरोप में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ इन बंदों को रजिस्टर कराया जाता है, वो फिर इनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए गाइड करना वो भी ऑप्टिमल, लेकिन उनको एक रास्ता दिखाना के लिए पॉसिबिलिटी है जो उनको फाइनेंशियल एड मिल जाती है, बाकी सपोर्ट मिल जाती है।